अब इस खूबसूरत शाम में जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ वो एक अपने आप में ही बहुत ही महान हस्ती हैं, उषा नायर। कोई बताएगा मुझे उषा का मतलब क्या है? दोस्तों बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ये उषा जो शब्द है ये इन्हीं के काम को दिखा रहा है जिसका मैंने खोज किया है। इट्स द नेम इज रिन्यूअल। ठीक है, रिन्यूअल, उजाला। शी इज अ ट्रेन्ड desire reversal. She's a trained desire reversal and powerful lady. She is a holistic health coach, a certified genomic wellness consultant with nearly 30 years of experience. The private healthcare space और इतने awards और rewards इनको मिले हैं. So I want to welcome Usha Nair. तालियों के साथ स्वागत किया जाए. You'll always forget that. I don't know why. Sorry. Dr. Usha Nair. Friends, I may not be an MBBS, okay, but I'm a very proud private healthcare professional. I have been with naturopathy since 1998. I have been with acupuncture. That was alternate complementary medicines happened to me. I thought my guru might be here, who introduced me to Madam way back 1995. So I miss Dr. Shashikant Sheth here. I thought he might have been here. So I stepped into alternate, complementary, and everything with healing, holistic healing. And then the world opened. So today when I look back 30 years, तब मुझे सच में पता नहीं था किस दिशा में जा रही हूँ, क्या सीख रही हूँ. But it is such a vast thing. And उसके बाद what I'm presenting to you today, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, because this is a new science in modern healthcare. It is, of course, I believe everything goes with each other. एक दूसरे के साथ mainstream healthcare, we may say Ayurveda goes with allopathy, goes with homeopathy, goes with all the different therapies that we do, क्योंकि हम सब उसमें experts हैं, है कि नहीं? We are all here because we are all experts in something. Yes? Yes? आपको सिर्फ भाषण ही सुनना है, कुछ तो जवाब दो, है ना? We are all here spending the day to learn कि मेरा बगल वाला क्या करता है, right? So I'm going to probably change your mindset by the end of my lecture today. वो मेरी एक छोटी सी कोशिश है. Yes, of course, the disruption in modern healthcare, I will tell you. So a little about me. मुझे बोला अपना intro खुद देना. I don't mind, but that will take half my lecture. Quickly, I'll tell you. I am now, the last qualification that I added is I am registered with the Acupuncture Council that has established in Maharashtra, and I am on their executive committee. So acupuncture happened to me years back, but recognition and एक platform official आज मिला है. Of course, I'm a qualified in various holistic health therapies. So a lot of old friends sitting here, so happy to meet them. And yes, this happened since 1995. Attended lots of national, international conferences, presented papers. It's been a way of life. And yes, जो आज मैं आपको एक टेक्नोलॉजी दिखाऊंगी, I presented on that genomic wellness at the United Nations last year, and I take lot of pride in saying ये presentation हुआ था मार्च में. Of course, thank you so much to Dr. Meher Master Moose for that opportunity. After that, suddenly somebody sent me a message in July saying that WHO is looking into genomics and wanting to do it a big way globally and calling for papers. Today, Bill Gates Foundation is also doing genomics, also talking about genomics, and genomics is precisely what I'll explain to you. क्या है, कहाँ से आता है, and that is the next step to healthcare. Yes, at the end of my presentation, you will have a small recommendation or a suggestion how you can use it for your clients, for your patients. आजकल पेशेंट्स बोलना गुनाह है, okay, they're all your clients, your customers, so let's give them little more dignity. They're not just sick, but we help them heal, so they have to be our clients. Yes, इस technology में 6 years plus, and I have given my everything into it, so I train, teach in this technology pan-India. If you search genomics and Dr. Usha Nair, you might find me on Google.
आई एम द ऑथर. सो जब अपना एक्सपीरियंस होता है तब सब लोग बोलते हैं किताब लिखो, है ना? कितने लोगों ने यहाँ किताब लिखी? आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट, है ना? बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. सबको एक किताब लिखना चाहिए. क्यों? एक, इट विल गेट यू ओरिजिनल, आपका जो लाइफ टाइम का काम होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, okay, it will get you to become an author because you are the expert in your therapy. ठीक है? That is why you should write a kitab, so people know about you. So one of my mentor told me, किताब लिखो. So I am the first Indian woman to hai author to have written on the science of nutrigenomics. My book got published last October. This is also the first book globally जिसमें सिर्फ true stories of using this science and health transformed 180 degrees hai. There are a lot of things, depression, medicines, 20 se 25 with sleeping pills reversed, diabetes reversed. It's in my family, 4 generations, okay? So that I am just fingers crossed. That will not happen to my daughter at 23 like it happened to me and my mother. So I'm waiting. She'll be 23 next month, not very far off. And yes, thoroughly non-healing ulcers जो हमारे पास भी आते होंगे as alternative complementary practitioners, those healed accident cases जिनको डॉक्टर ने बोला भाई अब ये बिस्तर से नहीं उठेंगे, ये 6 महीना 3 महीना से, like you know, people tell to cancer patients, that kind of testimonials have happened. And if that can happen to them, it can happen to any one of us. So that is the success and that is my book. So I am very, very proud of it. Yes, mainstream में अगर देखा जाए तो I am a PhD by research and a full-time MBA in hospital healthcare administration. I started my career just with a life sciences BSc. I graduated in 95. उसके बाद the postgraduate diploma in medical lab technology from KEM Mumbai happened. Then lot of alternative therapies happened. And उसके बाद आज I'm very proud to say कि जो भी जैसे आप सभी लोगों में एक खासियत है, so that 30 years took me from one step into other, and I wanted to do, of course, because everything begins at home. So I have cases of cancer in my own house. My own brother had cancer. Of course, he's in the US. And some people know, many people don't know. So something somewhere always helps. And that came to me. So today I take it as my mission with this technology of genomics. I want to touch at least 11,000 lives individually. Big task, 11,000 might be a very small number, but I promise you, I haven't even touched 500 in the last 6 years. So that is the challenge. In next 5 years, I wish to do that. All of you, I invite you, take a look at the technology, and then we can always discuss. My details will be here. You can take my number in the end. Sorry I took so much time for introduction, but I just had to create a base. Yeah, great. Thank you. This is the front, this is the back. Okay. Well, friends, like the topic said, I had to give you an idea for thinking. ठीक है? So, disease, where does it begin? There are a lot of concepts, lot of theories. हर पैथी में एक अलग concept आता है. So let's look at where everything comes on a common platform, because हमारे पास जो कोई भी आता है उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? जल्दी बोलो. How does that come? जोर से बोलो, जोर से बोलो. रिलीफ कैसे आएगा? हम क्या करते हैं? हम थेरेपी देते हैं. Yeah? Understand a big difference, because I will change your understanding by the end of my presentation. Okay, I have to point here. Okay, great. So, B. Kumar Sarji, Sachdev ji, and of course, my dearest madam, thank you so much. Gratitude for giving me this platform. I'm actually coming here after many, many years. So, B. Kumar sir has always been calling me, but I've been missing. But I promise I will not go missing again. I don't know if you can see this clearly. Can we switch off a little of the lights? Stage lights? Yeah, because otherwise the slides are not clear. So, yes, thank you. You can see me there? Okay, lot many awards, national, international. Yes, again, the platform begins with Dr. Meher Master Moose, because she saw something and making me stand here today after 30 years. I didn't even know, like I said, kahan ja rahi thi, but that's where she has brought me today, and I'm very thankful and very proud.
A few honored associations, yes. Russian House in Mumbai, FICCI Flow. I have a social aspect, okay? I do a lot of CSR, NGO, and community service. So there is the Tata Trust ka CSR projects. I did it for the women cabs in Mumbai, HDFC Foundation, UNDP, lot of things. Yes, integrally connected with Zoroastrian College. That took me to the UN. Also, Maharashtra State Commission for Women, where I learned how to do better quality social work, working with a politician of South Mumbai. International Human Rights Council, again, has taken me to the UN. And yes, I've been part of many NGOs, organizations, right since I turned 18. Velocity Genetics is into me for the last 6.5 years. So that got me my first award as a social entrepreneur. This was just 1 week back. So madam, this photo, I wanted to show you, the one in the red jacket. That is my first social entrepreneur award. Sorry. Okay. Lot of things in healthcare, 1 minute. I can't operate this. Somebody has to help me with this. This is going to take more than half my time. Is anybody here? God. Yeah, but it's moving too fast. It's taking away my slides. This has to go back. I want to go to right till front. Yeah, okay, next slide. This is a little of associations and collaborations and working I have done in my last 20 years plus of mainstream hospitals, administration, pathology. Next, please. Can you please help? Yeah, thanks. Okay, so now I'm going to tell you, okay, khulja sim types, okay? So the new era of healthcare disruption has arrived. Next, please. Thank you. Keep going. So if we can acknowledge, till the last tab, okay? If we can acknowledge, all of us know what is the open secrets of being healthy. Of course, plus therapy aata hai. But open secrets is what? Food? Yes, khana. So we will say good nutrition, organic, blah, blah, blah. Water, we talk a lot about alkaline water, जबकि दादी माँ के नुस्खे is as simple as सादा पानी में आप एक नींबू और एक खीरा काकड़ी डाल दो. That is your alkaline water. Home remedy, yes. Then we talk about clean air. Clean air में कितना अपने control में है? अभी इस auditorium में ही AC environment में, what is it that we can control? If somebody coughs or sneezes, we need our own immunity, right? So clean air कुछ हद तक हमारे control में है, कुछ हद तक हमारे control में नहीं है, mostly नहीं है. Exercise, कौन सा एक्सरसाइज? मैं रोज सुबह सूर्य नमस्कार करती हूँ. I do it 11 times. Somebody else does it 2 times. Somebody else does only walking. Somebody goes to the gym every single day. ये सोच के किसी दिन मेरा भी 6-pack बनेगा. How many of us? कोई तो जवाब दो. या कोई जिम नहीं जाते? Very bad, but good. All yoga practitioners. Yes. So specific exercises. कितना, क्या, कैसे? We'll come to that. And बहुत important चीज़ जो इसमें I want to bring to our information, एक और aspect होता है other than the 4 parameters that we know, that is our modern lifestyle. If you have not read my slide, तो मुझे बताओ what does modern lifestyle mean to you? किसी को कुछ समझ आया what it means? It is precisely our sleep, addictions, stress and such like. Other than these 4, whatever is there, एक दिमाग है, थोड़ा फिटनेस है, थोड़ा सिस्टम है, सब कुछ है. So everything else is your modern lifestyle. Next. So agree, all this affects us? Next. Give both the, yeah, thanks. Everything affects us. So what does it bring to? People who do management, they are very familiar with this slide. Okay? I am going to bring you the concept of holistic wellness. हम सभी एक therapy करते हैं, we are specialists in that. But we also to certain extent look at एक diagnosis या एक pre-history या फिर अभी तुमको क्या तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, fine, I will do your pain management and you will get relief right now. ठीक है? But there is one very big underlying thing which I want all of you to think about कि इसकी बीमारी आती कहाँ से है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है. आज ये ठीक होके गया, कभी कभी हमको लगता है ना यार कल ये शायद अगर वापस आएगा तो उसका दर्द बढ़ गया, तो अगर उसका दर्द चला गया, गया या नहीं गया वो वापस नहीं आया,
क्या पता मेरे बारे में मार्केट में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उसको अच्छा लगा या बहुत ही बुरा हो गया, राइट? वी हैव दैट एप्रीहेंशन, राइट? सो गेट इन टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज होलिस्टिक वेलनेस. क्या है? इफ एनी ऑफ यू हैव सीन दिस स्लाइड, वेरियस डायमेंशंस ऑफ वेलनेस. क्या क्या होता है? स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल तो हमको पता है, राइट? बट देर आर वेरियस अदर पैरामीटर्स, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल. वी हैव अ वेरी वेरी गुड डेवलप्ड ब्रेन, राइट? दैट्स वाई यू आर ह्यूमन बींग्स. सोशल है, फाइनेंशियल है, एनवायरमेंटल है, सो मेनी थिंग्स. और इसको हम अगर खुद की लाइफ में असेस करें, दिस इज लाइक अ माइन्यूट मैनेजमेंट क्लास, ओके? देन वी रेट आवर सेल्स कि ऑन अ पैरामीटर ऑफ 0 to 10 मैं इन सभी पैरामीटर्स पे कहाँ हूँ. एंड हाउ डू यू वर्क ऑन योर सेल्फ? जो सबसे कम है यहाँ पर क्या है? फैमिली, माई गॉड, सबसे बड़ी तकलीफ. एंड फाइनेंस, ये दो सबसे कम है. तो सबसे पहले आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ होलिस्टिकली टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट. येस, एग्री? Yeah, this is one parameter to understand. Next slide, please. So what is it about decoding wellness? What do you say about holistic wellness? Eh, मेरा slides चुराने का नहीं है. Don't use it anywhere. I don't approve. Okay, so basically, wellness is an act of practicing healthy habits. Healthy habits in quotes है, we'll come to that. On a daily basis to attain better physical, mental, emotional, overall holistic well-being, so that instead of just surviving, instead of just existing, कि मैं बाबा जी रहा हूँ, उससे बेहतर we understand significance of wellness and we thrive in life. कि it is every day is a celebrating life. Yes, we want that. First beginning with ourselves, then our family, then our society, then our clients. है ना? So something has to begin with ourselves. So it is very important to understand how it is linked, our healthy habits, how it is linked to our overall well-being. Interesting till now? थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगी, चलेगा ना? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. नेक्स्ट. ओके, सो अभी हमने कहा हेल्दी हैबिट्स. तो ये हेल्दी हैबिट्स कहाँ से आएंगी? हम कहाँ से आए? हमारे एंसेस्टर्स से. 7 पुश्तें मम्मी की तरफ से, 7 पुश्तें डैडी की तरफ से, राइट? उसके बाद वी हैड आवर नानी, दादी, एवरीवन इन द हाउस. दे गेव अस व्हाट? They gave us not just our genes, they also gave us our habits, food, अपने cultures, traditions, systems. तो इसमें से एक बहुत बड़ा concept आता है that मुझे अगर जीना सिखाया तो मुझे उनकी बीमारियां भी दिया. सही है? Agree? I am not saying something new out of the blue. तो वो उसका एक राज ऐसा है कि your genes, जिससे हमें ये सब मिला, प्लस हमारा एनवायरनमेंट जो हम फैमिली में रहे, कम्युनिटी में रहे, रिलीजन में, प्रैक्टिसेस में रहे, वो सब मिला के आपके जीन्स में एक और बहुत खास राज छुपा हुआ है. दैट इज़ नोन एज, विच कैन एक्चुअली, अगर आपने वो राज जान लिया, सो यू विल बी एबल टू सेव योर लाइफ. इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो व्हाट इज़ हेल्थ केयर? अभी हमने बीमारी की बात की, तो मुझे बताओ कि हेल्थ केयर में बीमारी मतलब सबसे पहला मेरे बाजू का जीपी डॉक्टर, मेरे पहचान वाला डॉक्टर, मेरे सबसे नज़दीक का हॉस्पिटल, ठीक है? दैट इज़ हेल्थ केयर फॉर अस. सो हेल्थ केयर इज़ एवरीथिंग. इट इज़ अबाउट मेडिसिन, इट इज़ अबाउट फार्मेसी, इट इज़ अबाउट पैथोलॉजी, इट इज़ अबाउट एक्सरे, इट इज़ अबाउट डॉक्टर, इट इज़ अबाउट स्पेशलिस्ट, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, now we will take 5 minutes on this slide, okay? I don't know how much you can see, but I couldn't get a clearer picture, but I will explain to you. We spoke about healthcare. Healthcare में सबसे ज़्यादा important, ये हम healthcare में कब जाते हैं? When we have some sign symptoms, okay? So sign symptoms आने पे हम गए curative healthcare, जो hospitals, clinics, doctors होते हैं, उसको बोलते हैं वो cure करते हैं, right? You have heard of that term, curative healthcare. So they cure us and इसीलिए then they will send us to specialists. आजकल सब चीज़ में specialists है, right? You'll have a pulmonologist, you'll have a diabetologist, you'll have a chest physician, you'll have a nephrologist, you'll have a neurologist. ठीक है? So that is how मुझे कुछ साइन सिम्टम हुआ और उसके बाद में I went to the curative healthcare and वहाँ से I was sent to the specialty clinics. Correct? बट इसका अगर आप देखो, वॉट इज़ इट ऑल अबाउट? ये साइन सिम्टम्स क्यों आए? बिकॉज समथिंग गॉट डिसरप्टेड.
Okay, so what all can it be? It can be anything from your assimilation, transportation, absorption, your energy, your communication between organs, between food and your intestines. It can be transport, anything of that sort can happen. But वो सब अगर कहीं पे एक सर्किट खराब हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार क्या है? उसके लिए जिम्मेदार इज सम काइंड ऑफ अ एंटीसीडेंट, प्रीकर्सर, कि ये कहाँ से आया. एंड उसमें देर विल बी लॉट ऑफ ट्रिगर्स, देर विल बी समथिंग कि ये हुआ, इसके कारण ये हुआ और इसके कारण हम बीमार हो गए, राइट? बट हम लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं? टुडे एज थेरेपिस्ट व्हाट वी लुक एट इज, इसको ये साइन सिम्टम है, मैं उसको मेरे थेरेपी से ठीक करती हूँ, ठीक है? बट लुक बियॉन्ड दैट. एक बार ठीक होके गया, ठीक है, टुडे इट इज़ नॉट अफोर्डेबल कि वो दोबारा वापस आए बीमार होके, बिकॉज इतने पेशेंट्स हैं, इतने कम डॉक्टर्स हैं. इवन यू सी एट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स एंड एवरीथिंग, कोविड इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल. तो उसमें इफ़ यू कैन गिव दैट एक्स्ट्रा आफ्टर आपका इलाज होके वो ठीक हुआ, वो आपसे खुश हुआ, then give him that extra. वो सब आता है from your mental, emotional, spiritual, genetic predisposition, your rest of the, like I said, modern lifestyles. उसमें बहुत कुछ impact होके, implement होके आता है. That also includes one very important thing, that is your experiences, your attitudes and your beliefs. Agree? How many of you agree? Yes, agree? ये सब कहाँ से आता है? You see the roots? I will read out the exact things that are in the roots. Okay? सबसे पहला, ये अगर हमको अफेक्ट होना है या हमको कुछ एक्सपीरियंस होना है या हमारा कुछ एटीट्यूड या बिलीफ बनना है या हमारा जेनेटिक्स में कुछ आता है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम फ्यू पैरामीटर्स, विच फ्यू नहीं, दिस कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. But there will be much more. It is not a limiting science. It comes from your sleep and relaxation. It comes from your exercise, your movement. अभी हम सब इस हॉल में कितनी देर से बैठे हैं? कितनी बार तुम लोगों को समझाया, आधे घंटे से ज़्यादा एक जगह पे एक पोजीशन में मत बैठो, सुनते ही नहीं तुम लोग. Yes, very important. That is also one very important parameter. Then again, there is, wait, I need chashma. Okay, there is nutrition, hydration. We already covered that. There is stress and resilience. हम उसको मराठी में अगर बोले तो, नहीं, हिंदी मराठी दोनों, ओके, प्रतिकार शक्ति कहते हैं, ठीक है, अपना इम्यूनिटी कहते हैं, कॉमन कोविड लैंग्वेज, ओके, एवरीबडी नोज इम्यूनिटी, ठीक है. देन अगेन देर विल बी सर्टेन रिलेशनशिप इश्यूज. Yeah, it can be, it's not only about people to people relation, it can be food to food relation, it can be, I mean, I'm a naturopath शुरुआत से, okay, so for me food comes very easily. Incompatible foods हम कहते हैं, right? आपने अगर दही के साथ में मच्छी खा लिया तो आपको blah blah blah, I will not term anything, okay? ऐसा बहुत कुछ beliefs, I won't call it superstition again because there is a science behind everything today. ठीक है, वो सब आता है. उसके बाद में देर इज़ ऑलवेज अ ट्रॉमा. ट्रॉमा कैन बी वॉट? ट्रॉमा कैन इवन बी जस्ट, मैं आ रही थी चल के, सब मुझे देख रहे थे और मुझे ठोकर लग गई एंड आई ऑलमोस्ट फेल. सो दैट इज़ लाइक, ओ माई गॉड, वॉट विल पीपल थिंक अबाउट मी? ठीक है, दैट कैन बी ट्रॉमा. अ एक्सीडेंट कैन बी ट्रॉमा, एन इंजरी कैन बी ट्रॉमा, अ डेथ ऑफ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव can be a trauma. So there can be lot of kinds of trauma. That is also going to influence us, cause some trigger somewhere. Okay? Then there is also microorganisms. हम बच सकते हैं. कोविड से कौन कौन बच गया बोलो? बचा कोई? अरे बढ़िया, वैक्सीन ले लिया टाइम पे. बूस्टर लिया? बूस्टर नहीं लिया? बढ़िया, हमारी मैडम ने भी नहीं लिया. Okay, and one more important aspect of parameter is environment, pollutants. हमने air की भी बात की थी. So all this is the roots. यहाँ कहीं पे मैं, है ना, पता है मुझे रोज़ 6 से 8 घंटा सोना चाहिए,
बट मेरे इतने पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है ना कि साला मैं 11 बजे के पहले है ना क्लिनिक से निकल नहीं पाता, बंद करने तक, शटर डाउन करने तक 12 बज जाते हैं, घर आके 1 बजे खाना खा के 1:30 बजे 2 बजे है ना मुझे याद आता है मैंने फेसबुक नहीं देखा, मैंने मेरा सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं डाला, मैंने ऐसा कुछ फ्रेंड्स नहीं बनाए, चैट नहीं किया, तब तक कितने बज गए? 4, right? So we sleep hardly 1 or 2 hours. That affects. So there are a lot of such parameters which will affect. So illnesses do not come upon us out of the blue. Who is this guy? This guy is Hippocrates, who is the father of modern medicine. जैसे श्री कृष्ण ने कहा था ना, 99 होने दो, भरने दो, 100 हो जाएगा ना फिर मैं एक्शन लूँगा. तो ये जब अपने आप पे एक्शन हो जाता है, सो ये जब 100 पे हम पे आ जाता है, आई थिंक जस्ट 1 or 2 slides, आई एम डन विथ मोस्ट ऑफ इट, ओके, तब वो सडनली आता है. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर जीन्स? आप ये सब कुछ समझ सकते हो, कौन सी बीमारी आएगी नहीं आएगी. मुझे हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी का रिस्क कितना है? मेरी मम्मी को डायबिटीज़ 23 साल में हुआ, मुझे भी 23 साल में हुआ, आज तक मेरे भाई को नहीं हुआ जो मेरे से बड़ा है. इज़ देयर एनी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हुआ? नहीं, बट देयर विल बी इन योर जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन. सेम वे कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी डिसऑर्डर्स, थायराइड, बहुत कुछ. सो दिस इज द न्यू मॉडल ऑफ हेल्थ केयर जो मैं कह रही थी, द डिसरप्शन इन हेल्थ केयर. वाई? बिकॉज इट इज़ प्रिडिक्टिव. ये आपको बता सकता है आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या बीमारी हो सकती है और क्यों हो सकती है. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड अ रूट कॉज, यू कैन हेल्प दैट पेशेंट कि भाई आज आप ठीक हो गए, कल के लिए आप ये फॉलो करो तो आपको दोबारा ये बीमारी नहीं होगी. Does that sound good? Yes? You think all you will be able to get more popular in the market if you can do that for your customers? Yes? विश्वास बढ़ता है clients पे. So it is about predictive, it is proactive. क्यों? आज आपको predict कर दिया तो आपको पता है कल क्या action लेना है, कहाँ से शुरुआत करनी है. It is very personalized. This is as accurate as our thumbprint. 2 लोगों के thumbprint same होते हैं, जुड़वा बच्चों के भी नहीं होते ना, same. अपना जुड़वा भाई बहन होगा उसका भी जेनेटिक्स सेम नहीं होगा. सो इट इज़ 100% पर्सनलाइज्ड एंड उसके कारण यू कैन कीप अवे योर बीमारी फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट. उसमें एक दिनचर्या, उसमें एक स्केड्यूल, एंड दिस इज द साइंस. इफ़ यू अंडरस्टैंड योर DNA, यू कैन यूज़ फूड एज योर मेडिसिन एवरी डे. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. शरीर से हमारा खाने से हमारा शरीर बनता है कि नहीं? हर बीमारी के बाद एक मल्टीविटामिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि नहीं करता है? दैट्स इट. सो न्यूट्रिजेनोमिक्स इज द साइंस, इट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिशन विथ योर जीन्स. आप जो खाते हो उससे अच्छा या बुरा जीन्स ट्रिगर होते हैं. जीन्स को ये नहीं पता कि वो अच्छा था या बुरा था, ना ही खाने को पता है. जब आप बीमार होते हो तब इट इज़ क्लियर कि आपने कुछ गलत किया जिससे वो गलत बीमारी वाले जीन्स ट्रिगर हो गए. And this is the latest technological breakthrough that makes use of diet and exercise. It's not only diet, it's all the 5 parameters of my first slide, and it helps people stay healthy permanently. So it is definitely about personalized nutrition. मेरे लिए क्या, कितना, कब, किस टाइम पे ज़रूरी है और क्या ऐसा है जो मेरे लिए जहर है. So it covers everything: nutrition, water, fresh air, exercise, and most important, it covers your lifestyle, your beliefs. So let's help heal everybody completely. That is my proposition. That is my offering to you. Yes, DNA profile can include so many things. Today, what I offer is 300 genetics profiling in 22 vital DNA parameters. बहुत कुछ है इसमें. It's called as predictive genomics. And whether it is medical or predictive, predictive is for healthy people. If you think you're healthy today, do it so you will stay healthy tomorrow. And medical लोगों के लिए prescription genetics होता है. उसका अगर मैं बोलूँ, my friend's dad had lung cancer, उसका कीमो असर करेगा नहीं करेगा, उसके लिए 1 gene was tested by prescription. That 1 gene 9 costs my friend 72,000 rupees. 1 gene. Okay, and what I am offering to you, I very openly gave it to the UN, less than $1 a day. You want to stay healthy for 20 years, less than $1 a day. Spend it on yourself. Yes, this is not something all of us know. Amir Khan and Gajni and Lagan. So Lagan nahi, apna Dangal.
his transformation, you can see this on Google, has been done with this technology of nutrigenomics. He had a trainer coach from Bangalore. Olay, how many of us know women beauty products? Olay, we know, right? Very popular. Sometimes we say, यार कितना महंगा है, but बहुत असरदार है. They are using this technology, इसीलिए वो बहुत असरदार है. Google-like companies, Nestle, they have invested in these kind of programs for the future. And the latest I told you, Bill Gates is talking about us. So I'm not really going into the details, okay? I wanted to, but it's too much time. So it tells us the risks, it tells us the interpretations, कि खाली अगर मैं बोलूँ विटामिन B12 से हमारा स्किन खराब होएगा, हमारा माउथ में अल्सर आएगा, बट उसमें और भी बहुत सारा ऑर्गन्स एंड प्रोसेसेस भी खराब होगा. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस. इट हेल्प्स बिकॉज इट गिव्स अस आवर रूट कॉजेज. सो व्हाट इज डिसीज रिवर्सल अबाउट? टुडे आई एम अ एक्सपर्ट इन डिसीज रिवर्सल. It is about your entire life. Okay, so it is about everything. It's not just about yahan dard ya yahan food ya yahan exercise, nothing. It's everything together. So take care of your food, take care of your water, take care of your dincharya, your lifestyle. Take care of your exercise. And yes, all of you are experts in your field. So therapy, of course you will take care. And take care of all this after therapy on a very timely basis. Save the lives of people whom you can today. And I think that's it. Thank you so much for so much time given to me. I am really obliged, but New Science, I think you did a lot of justice. So friends, I do have some spot offers, but I'm not reading that now. Please meet me personally. You can take my number from B. Kumar sir in case I leave with Mehranti now. And this is one high-end therapy that I do. It's called as a craniosacral therapy. So if people have heard about osteopathy, this is the next level to osteopathy. And my offering for giving me a patient ear is, I think my number is here. Anyways, please connect with me. Right now, I'm doing free sessions. So please take a session, experience a very different kind of therapy, okay? And definitely, you will be awed by what happens. Mehranti sitting here today, I've been giving her therapy yesterday. I've given her therapy 1 month back. And we had a therapy this morning. She slept it out. And I think that's why she's here. So it's something you do for yourself and your family. So she's next after my mom. I don't have mom today. So thank you so much, friends. This is my number. And you can give my pen drive. If you're copied, it's fine. Any questions you can quickly ask, maybe 1 or 2. Otherwise, next speakers are waiting. Your chai nashta is waiting. I am sorry. So thank you so much, friends. And if anybody has anything to say or share, definitely we'd look forward to it. So like you have been writing people's numbers, if you wrote down, fine. Otherwise, 937. I saw that became a practice. A lot of old people know me with another number that still exists, but 937 21 980 11. So I call to all these therapists out here, specialists, come forward, help yourself, and help others in your life. Thank you so much. Thank you. A big round of applause for Dr. Usha Nair, please. मैं इतना जल्दी सेव नहीं कर पाऊंगी. Please send a message on WhatsApp. Hi, my name is so and so. ठीक है? Sixth Sense Conference. I'll quickly save your numbers. Thank you.